reputed Ayurvedic physicians and other staffs of all over India. First of all, I am very much thankful that I am having some experience on doing this network pharmacology and this molecular docking. So I to present some of the facts, what is network pharmacology and why we should go for this type of studies for our future prospects for the globalization of Ayurveda. So I just want to share my presentation. Actually, this is a computer-aided drug design program. As per Dr. Anil Shukla sir, he told me that you should give your 3 lectures on this topic. So today, actually, I want to share the preliminary things. How should we go for this molecular, this network pharmacology, this molecular docking and other things. Next day, in Monday and Tuesday also, we should run some of the softwares. So I will write down all the softwares after this presentation. So what are the softwares need and some network problem is there. Sir, actually, I think I should stop. मतलब वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ, तो उसमें क्या हो थोड़ा सा नेटवर्क ठीक रहेगा, क्योंकि मतलब मैं जो ज्वाइन किया हूँ मोबाइल से ना, तो कनेक्ट किया हूँ, तो अभी मैं सुनाई दे रहा हूँ सर. जी मनोज सर, अगर आप हेलो, पीपीटी दिखाएंगे, यस यस यू आर ऑडिबल मनोज सर. अगर आप पीपीटी दिखाएंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. समथिंग इट शुड बी विजिबल ऑन स्क्रीन. ओके 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 ओके. So PPT is sharing now. I am sharing my PPT. yes. It is visible now. Yes, sir, it is visible. Okay. Can I start, sir? Sir, Visible, right? please make on presentation mode, sir. Please make it on presentation mode. It is visible or it is not now visible? Sir, अभी दिख रहा है क्या yes, मैडम? please. Visible, sir. Visible, sir. Okay, okay. So first of all, actually this is online training. मैं थोड़ा सा पहले इसमें चेंज क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट.
सर मेरा अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है ना इसका, एक्चुअली पीपीटी ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो नेक्स्ट स्लाइड नहीं जा रहा है। सर प्रेजेंटेशन मोड पे ऑन करके होगा, देख लीजिए एक बार। सर नहीं तो पीपीटी हमसे शेयर कर दीजिए, यहाँ से ट्राई करते हैं। हाँ हेलो हेलो, सर अगर हेलो, एक मिनट एक, हाँ डॉक्टर मनोज सर, हेलो हेलो। यस सर, यस सर। सर आप पीपीटी पीपीटी आप डॉक्टर मीना को भेज दीजिए। आप मूव मूव कीजिए इसको, स्लाइड्स को। सर भेज दे। जी हाँ हाँ ठीक है सर। अभी मूव हो रहा है क्या? अभी हो रहा है? हाँ हाँ नहीं नहीं सर, हो रहा है सर। स्लाइड हो रहा है, अभी हो मतलब रहा है, मूव हो रहा अभी है हो ना? गया। अभी हो गया सर, जी जी हो रहा है। हो गया सर। सर मूव हो रहा है, जी जी। पूरा नहीं दिख रहा हाँ है? हो रहा सर, कीजिए, हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। हो रहा है सर। ओके ओके सर, मैं फिर सॉरी फॉर द, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक। तो सर पहले हम लोग जानते हैं, सभी लोगों को पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। पहले हम लोग समझते हैं कि सर एक्चुअली नेटवर्क फार्मोलॉजी क्यों जरूरी। हाँ अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर, हेलो आवाज आ रहा है, आ रहा है सर, आवाज आ रहा हेलो, है। मेरा आवाज आ रहा है मैडम? एक, अभी दिख रहा है मैडम? हाँ जी सर, जी दिख रहा सर। है। हाँ जी हाँ, पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी जी। हाँ तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ दी एक्चुअली दिस सेकंड थिंग, एक्चुअली we have discussed that our body is a complex network of cells, tissues and organs. They are interconnected. Ayurveda में also they have told that this samadosha samagnisha samadhatu malakriya प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दिए थे। इसे चरक में भी जो बताया गया, सम मांस प्रमाणस्तु सम सह ननो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणां न बलेन अभिभूयते। इस सब जो बताया गया है, जब ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब मेरा ये कहना था, कोई भी हम लोग बॉडी में हमारा जो भी चीज चल रहा है, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो व्हाट इज नेटवर्क फार्माकोलॉजी? एक्चुअली नेटवर्क फार्माकोलॉजी डिसिप्लिन that integrates systems biology, bioinformatics and pharmacology to understand the complex interaction between the biological system and drugs at a molecular level. Actually, what happens? This is a pharmacology which are interconnected, a network connected by a network of two or more things that are linked in order to share resources. Okay, madam. Am I audible now? Na? This, यस सर, यस सर। okay, okay. Then we go to the next thing. So what we should learn from this network pharmacology? We should learn that what is the interaction between a bioactive,
For example, this bioactive is any molecule present in any herbs or any formulation. The bioactive compounds and the pathways related to any disease. This pathway, because in Ayurveda also they told that every disease and in Samprapti, this same thing that in our modern science also, this is some pathways is there. In every disease, there is some pathways. So what is the interaction between the bioactives and that pathway? We should learn from this network pharmacology. Again, another thing, this is a relation between the drug and the disease susceptible genes. Every disease has some specific genes are there. And what is the molecule? Actually, the drug, the containing the molecules, and what is the susceptible genes, they are interconnected. We should learn from this network pharmacology. Another thing, this is a process by which you can draw a new drug designing process. The safety and efficacy of that drug also you can know from this study. Another thing is the molecular interaction of a drug molecule in a living cell. All the things you can know from this network pharmacology. The target of that drug, in which target, in which protein, which amino acid, which pathway will know from this network pharmacology. Another thing, this formulation discovery, that is this reverse pharmacology process. All these things actually you can know from this network pharmacology. Before going to the detail, actually, I want to show this slide also. We call that interaction between bioactive compounds. What does mean? What does it mean? Because there are some bioactive compound, whenever there is some interaction is there, it may be interacted by the synergistic effect, or by any additive effect, or by antagonistic effect. Antagonistic, we know that when the effect is reduced, it's called antagonistic. When this effect is combined, it's called additive. And the synergistic effect, when the compound is bioactives are present, significantly greater than the sum of their individual effects, in order synergistic. Similarly, the pathways related to any disease. Actually, we learn from network pharmacology what are the pathways. Like our Samprapti in Ayurveda, we call it as pathways. There are mainly two types of pathways you can learn from this network pharmacology. Whether these genes, those are responsible for this disease, and the interaction between the molecule, the bioactive molecule present in our drug, and how it is, how the process happens. We can learn from this network pharmacology, and there is geo pathway. This geo pathway is generative enrichment pathway, gene enrichment pathway. This is a pathway in which you can learn this gene does within a cell. What is the gene? What cell? What this gene will do? We all know this from network pharmacology. Before going to the deep, actually, I also show some of the slides regarding the bioactives and this the different route of administration described in Ayurveda. Because in every sense, we call it that's like for this skin, there is snehana, swedana, and lepa, abhyanga. There is also some interaction between this pathway. We can learn from all the things from this year also. Whenever any mucous membrane, this nasyama, gandus, basti, asyatana, pichu, these are all the things as a pralepa, pradeha, this pariseka, ropana, anjana, bharti, this pichu, utkarika, pindika, dhumapana. These all the things are described in Ayurveda for this route of administration. We can study all the things by this network pharmacology, because in nasyam, how this nasyam will affect in different cells. Because if you give anutala nasya, how it works, how it you can learn if you learn this network pharmacology and this molecular docking and this molecular dynamics. Another thing, QSAR, all the things you can determine how this anutala will be effective. If any medicine or dhumapana, all the things actually you can determine from all this network pharmacology. These are also the different doses for this is the route of administration of our herbal drug. For example, Sutasakar Ras, how this Sutasakar Ras will be effective. All the things you can determine all from this network pharmacology. Before going to that deep of this network pharmacology, I just say some of the things which are described in Ayurveda also. Because when you think that what are the things described in Ayurveda in relation to
this network pharmacology. Before, if you compare our all body, it will divide into mainly 5 parts. That is Koshtha. From Koshtha, any medicine goes to Margastha Rasa. From Margastha Rasa, it goes to Sakha. From Sakha, it goes to Anga. This Upanga. This Anga is the major part of the body. Upanga is the minor part of the body, and the Marmasti Sandhi. So we can conclude that there is a Utpatti in Koshtha, that is Amasya. And from Amasya, this medicine will go to divide into Sthai Rasa and Posaka Rasa. From Sthai Rasa, this 24 dhamnis from Hudaya opens in hair follicles. Which in Posaka Rasa, from gut to heart, distribute all over the body. This Sthai Rasa also divided into Sthanastha Dhatu and this Margas Dhatu. From Sthanastha Dhatu, this is specific assays it will go. From Margas Dhatu, from following through Dhamanis. And from this is Sakha, that is this Pakvasaya. From Pakvasaya, it go to all over the Dhatus, that is by the meaning of Rasagni, Raktagni, Mansagni. It will digested or assimilated in our body. So these are the things which are described in Ayurveda also. Because if you want to learn this network pharmacology, we should learn from the Ayurvedic point of view. What is the role of any medicine if we go to the Koshtha and then go to Margastha Rasa? If it goes to this Pakvasaya. So all the things you can know from this network pharmacology. Also, there are some different Ayurveda concept because from our Rasashastra point of view, I also divide all the things. What are the formulations which are effective in Koshtha? Because if you see all the things, this Panchavidha Kasaya Kalpana will more or less more effective in the Kosthagata diseases. The Sanskara Kalpana, that is Sandhana Kalpana, Sneha Kalpana, Abhalaya Kalpana, and Kritarna Kalpana. Only Sandhana Kalpana is more advertising whenever the disease in the Margastha Rasa. Sneha Kalpana will be more effective when the disease in the Sakha or Pakvasaya. This Abhalaya Kalpana is more in the disease in the Sakha and Pakvasaya also. And Kritarna Kalpana, this Mandapaya, Yabagu, Bilapi, this is also Sakha and Pakvasaya. This Gugula Kalpana in this Sthanastha Rasa, this Laha Kalpana in Sthanastha Rasa. If you determine all the things, we can determine which pathway it will be effective. Because if you the contemporary science, they have also told there are 3 types of pathways. One is metabolic pathway, another is gene regulating pathway, third one is signaling pathway. More or less, these 3 pathways are more responsible for any type of drug interaction or any gene interaction or protein-protein interaction, protein-amino acid interaction. All the things you can know if you know that this medicine is effective in Koshtha, Margastha Rasa, Sakha, or anywhere. So from Ayurvedic point of view also, we should learn how this medicine will affect which type of organs, whether it is effective in Margastha Rasa, whether it is effective in Sakha, whether it is effective in Marmasti Sandhi. So these things, if you determine that that this pathway is effective in this metabolic pathway. For example, I did my student Krabdya Rasa, and this was Euphorbia and Erifolia. There is Snuhi. I describe all the things later. And that's again another thing that is Chatusama Yoga for pediatric patients for useful for the Atisara. And also the Sarvanga Sundar Rasa, that is for Jora Adhikara. What do we find that this Karbhyadi Rasa will be more or less, it will be effective through this metabolic pathway. This is Snuhi. Snuhi is a drug. It will be effective, it will cross the signaling pathway. And this Sarvanga Sundar Rasa, it will be also in metabolic pathway. So whenever you determine that in which pathway it will be effective, then you can tell that is its medicine which is effective in Koshtha. Whenever it is signaling pathway effective, it will be effective in different Marmasti Sandhigata Roga. If it is in this gene regulatory pathway, we call it is effective in Sakhagata Roga. So then only you can determine how, where, and when it will be effective. So all the things actually, these are the things in Ayurveda Rasashastra Kalpana also.
Kupipakka Kalpana, where it will be effective. Mainly it will be effective in the Marmasti Sandhi. This Kharaliya Kalpana, it will be more effective in Sakha. This Parpati Kalpana, it is more effective in Koshtha. This Potali Kalpana are more effective in Margasthirasa. How you can determine if whether whenever you see that this Potali is effective in metabolic pathway, you can call it as it is effective in Margasthirasa. When this call that is Rasa Parpati, it will effect in metabolic pathway, you can call it as a Koshtha. Also, we are giving in the Grahani present Rasa Parpati. So all the things you can determine from this network pharmacology. Another thing, actually, there are different Nyayas described in Ayurveda, that is Khiradadhi Nyaya, Khalekapota Nyaya, and this Kedar Kulya Nyaya. These all the things also we can interpret that this when in any cell, in any tissue, or in anywhere, these three Nyayas are going on. Because in modern also, this in contemporary science, we know that this metabolic pathway, gene regulatory pathway, and this signaling pathway, these three pathways are interrelated to each other. Similarly, in Ayurveda also, in our Ayurvedic ancient scholars, they told that this Khiradadhi Nyaya, Khalekapota Nyaya, and this Kedar Kulya Nyaya are interpreting and each other in every cell, in every tissue, and every organ of our body. What is this Khiradadhi Nyaya? We are not that. This is a chemical reaction that takes place in a cell to break down a build-up molecule. Liver के अंदर जब वो thousands reaction, those reactions are just which form the rasa rakta dhatu by the process of this anabolic and catabolic process. This is called as Khiradadhi Nyaya. This Kedar Kulya Nyaya, whenever this sonit के अंदर जो गंध भाव उत्पन्न करता है, this is the control the expression of thousands of genes in development process. That is the gene regulatory pathway. We can call it with this Kedar Kulya Nyaya. And this Khalekapota Nyaya, what does it means? In Ayurveda, it is called as पृथक मार्ग में जाकर जो molecule काम करता है, उसको हम कहते हैं Khalekapot Nyaya. And this similarly, they have described it as a signaling pathway. So whenever cell receives a signal, when a molecule, that is, for example, Euphorbia nerifolia, like the molecule present in this Euphorbia nerifolia binds to a receptor in the cell. This activates the first molecule in the pathway, which then activates the another molecule, and so on until the last molecule is activated and the cell function is carried out. This is called as Khalekapota Nyaya. So these three pathways we can determine, we can know in which pathway this medicine will be effective by knowing this whether metabolic, signaling, and gene regulatory pathway. Also, another thing also we can interpret this is Khiradadhi Nyaya also. Khiradartha Sarvatvanada, it's with this Sakrapani Tika, they told that these similar things like binding to receptor. Whenever a molecule binding to a receptor, also this type of things also happens. When the molecule is through ionic channels, this Kedar Kulya Nyaya, you can interpret it also. And whenever these enzymes are transport proteins, that is Rasa Pruthak Dhatu Margagata Sarasadi Posayati, Pruthak धातुएं बनाते हैं, तो उसमें हम खलेकपोत न्याय से जोड़ते हैं, तो इसको भी हम लोग ट्रांसपोर्ट है जो एंजाइम प्रोटीन के साथ भी जोड़ सकते हैं. So these are the things we can correlate in Ayurveda and this contemporary science. So this is an emerging field actually. This is a new thing, but it is not new for modern people. They know all the things, but I think these are the things we should draw from Ayurvedic point of view. Because Ayurveda describes this disease, the philosophy of a formulation in a different way. Because they are using as a chemical, we are using as a whole extract or other things. This whole extract will have a 2000, 4000 number of molecules. And 2000 number of molecules, how they are interacting each other in different type of diseases. We can learn from this, this emerging field. So this is a computational approach. Actually, these are not the these are basically a theoretical approach, but it's a computer-aided drug design. This approach is this is a very good approach to learn all the Ayurvedic philosophy in a modern way. So it can identify the potential drug targets by examining how multiple drug molecules interact with various protein and gene networks within a disease pathway. Because there are different pathways are there for any disease, what called it as a samprat in our Ayurveda.
the Samprapti Vighatana and the Samprapti Sangatana. There are the two things actually. Whenever you give a molecule or any drug to a patient, there is Samprapti Vighatana is there. So in which way this Vighatana will happens, we can learn from this network pharmacology. And also in which way the Samprapti Sangatana will be there, we can learn from all the things from this network pharmacology. So we can learn that single target interaction or multiple target interaction. So these are very complex theory, but it is a very easy to do. When you learn all these things, very easy to do, and we can interpret all the things in a modern way. And for the globalization of Ayurveda, we should learn and we should interpret our things in a modern way. Then only the theory can be established in a more efficient manner. So already I have told that these are the key points about the network pharmacology. That is this is a multi-target approach. We all know that in Ayurveda we are having a number of molecules in any single herbs. So what are the number of diseases? What are the number of targets? What are the number of proteins? The amino acids? You can learn from this all the network pharmacology. This is a computational things, but so how does it this network pharmacology work? We should collect some of the data. We can make a network and then analyze that network. And then whenever you analyze, for example, I just said that recently we have done a study in our Raipur on the Euphorbia nerifolia. The single dose, it contains a galvanic acid. The galvanic acid has the most finding molecule present in Euphorbia nerifolia, which is effective in different pathways related to this leukemia. So if you know, because there are many chemicals, many molecules present in Euphorbia nerifolia, that's SNUHI. But the main chemical compound, the active molecule present in SNUHI, which is more effective in this leukemia, we can learn from all the things by doing this network pharmacology. So this is a improved drug discovery process because all the data are present in online. We should have to collect by one. And how should we collect? I just give you all the details from here, from my slides, further slides. So first of all, we should know the literature. What is the, for example, we did a study on this leukemia of Euphorbia nerifolia and leukemia. Similarly, I have studied this Krabbyada rasa for this pancreatic cancer. This Harbaga Sundar rasa for this any antibacterial property learned from this network pharmacology. Similarly, we should learn the literature review. First of all, we go to literature. Because we want to, before going to the network pharmacology, we should learn in which disease it will be effective. Because there are different genes are responsible for different diseases. If you know that, for example, in Vaishya they have described this adhikar-wise diseases. But from my point of view, this is a wrong concept. Actually, in Ayurveda formulations, we cannot call that, for example, this Krabbyada rasa will be effective more in this ajirna, because most of the physicians, they have prescribed this Krabbyada rasa for ajirna. Similarly, but what we found in our study that if it will be effective in case of pancreatic cancer also. It will be effective in Jaladhara. They have mentioned in that Phalashruti that Krabbyada rasa is having the Phalashruti. They have told that it is in Jaladhara. It is for this tholya. And we find from the network pharmacology that there are different processes which are responsible for the tholya, which are responsible for the Jaladhara. The chemicals, the active ingredients present in that formulation will be effective in this type of Phalashruti. So from Vaishya point of view, they have divided the formulation in a different way, but we should learn that in which Phalashruti it will be more effective. Then only can establish our data in a more efficient manner.
So first of all, you should know the literature review, then the online database. Online database, many databases are there. And then for chemical fingerprinting or this LCMS, GCMS, there are Sir. different. Yes. So sorry for the interruption, sir. The slides are not moving. This one अभी move हो रहा है मैडम? नहीं sir. एक सर. अभी मूव हो रहा है सर. अभी हुआ ना? अभी हुआ सर. ओके, आप बता दीजिए एक्चुअली नेट. ओके सर. अभी दिख रहा है मैडम? अभी दिख रहा है सर. हाँ. So this is a process. This is a totally this is a computer-aided drug design process. Here actually we should collect some of the data from the online, and we can know from what is the pharmacokinetic, what is the targets, in which target it will be effective. So all the things you can learn from this network pharmacology. So this is actually I just this is the figure. For example, our drugs are single target drug discovery, multi-target drug discovery, because in Ayurveda we are having this multi-target drug discovery. This is a polypharmacology approach. This network pharmacology process is a polypharmacology approach. Actually, there are this, for example, in the first figure, we call that it's a single target, single key. We call it is a single key, and here is a multi key. So we can find whether in this single key, whether it is specific disease it will be effective, or in a multi key, or in different diseases it will be effective. So this is this study is totally our Ayurvedic drugs needs this polypharmacology approach, that is drug repurposing approach, and this master key compound approach. So all the things, because one molecule have different. For example, drug 1 is acting on a drug A. For example, it can be a multi-drug pharmacology approach. Drug 1 can act on multiple targets, not only single target. In in contemporary, in modern science, they approach in a single target, but in our drugs, it's a multiple targets. So multiple target data we should generate from this network pharmacology. This actually another thing. Actually, some of the myths are there. That if you go for this network pharmacology, there is no need of any experimental study, or there is no relevant of this clinical study. But this is a myth. Actually, whenever we go for the drug designing, this computer-aided drug design, when you collect that, this is the most molecule, this is the chemical present in this formulation. This is the most validated molecule present in this formulation. Then we just extract from that molecule from that drug. And also we can try this molecule in a different way, and this way will achieve more efficiently. And in this way, for example, in euphorbia neriphilia, there is a molecule named is galvanic acid. If you extract that galvanic acid from that formulation and that herbs, and just apply that herb to a disease, for example, in this leukemia, then only we can study it in a more efficient way, and this we can determine this formula in a established way. Established fact, we can develop a established fact that it contains a galvanic acid, and it will be more effective in this leukemia. So this is the this madam, this figure is अभी दिख रहा है ना मैडम? हाँ सर दिख रहा है. हाँ दिख रहा है सर. हाँ, तो मैडम इसमें क्या है, there are different, we should isolate different compounds. There are also different techniques by which you can isolate these compounds. There are two type of methods, that is wet method and this dry method. In dry method, we should go for this PubChem data, PubMed data, and different sites are there where you can collect all the molecules or the chemicals or the bioactives present in this formulation.
So basically, network pharmacology, there are we should collect data like compounds. What are the compounds present there in that formula? What are the targets? What are the targets? Different targets are there. In which target it will be more effective? These are all described in online. And what are the pathways and what are the diseases? There are different pathways and different diseases are there. For example, I have already described all the things. This Kabdyadarasa, they have described that is Karyas, Thulya, Nirbahana, Rogahara, Gulma, Priya, Jalodara, Batas, Lesma, Nirbahani. This Snuhi, they have described as this Granthi, Arbuda, Bilayani in Sahitas. This Chatusama Yoga, they have described this is Amati, Sara, Nahan. This Sarbanga Sundaras, that is Sarbesu, Joro, Rogesu. And what after doing this network pharmacology, what find that these are the pathways. Fat digestion absorption, it will be more effective. Arachidonic acid metabolism, the effective in the molecules present in there. These are the pathways. These are the metabolic pathways which are more relevant, more interacted. And this PPR signaling pathway, this renin-angiotensin pathway, because they have described that it is effective in Jaladhara. But no one in our physical, no physician in our Ayurveda field, they are applying this Kabdyadarasa in Jaladhara. But from network pharmacology point of view, we can identify it is more effective in Jaladhara because it is more related to renin-angiotensin system pathway. Similarly, SNUHI, this is more related to steroid hormone synthesis pathway, CMP signaling pathway, and also it regulates the actin biosynthesis, proteoglycan in cancer. The Chatusam Jago, this is effective nitrogen metabolism and glutagenous synapses. Sarbang Sundaras metabolic pathway. So all the things are there. These are the things which we have studied in our Raipur. That is the genetic enriching pathway and this cake pathway. This is the Euphorbia nerifolia. This another finding what we have observed in Euphorbia nerifolia. It will be more effective in prostate cancer. We have observed it in leukemia, but from after doing the network pharmacology study, we think that if anyone want to prescribe this Euphorbia nerifolia in prostate cancer, it will be more effective. So these are the things actually. I will describe all the things. This is the approach of a network pharmacology. First of all, we should collect all the data from literary review. That is, for example, I have shown it the Euphorbia nerifolia, that is SNUHI. And it's actually one of my colleagues, that is Dr. Omprakash Raut, he's the co-guide of this study. Actually, I am doing all the things for this network pharmacology. And this Euphorbia nerifolia, we did that the LCMA study. Then we got to different databases. There's PopChem databases, Drug Bank. This is the way for doing this any network pharmacology study. First of all, we should go for this dry method or wet method. Then we should know whether this is effective in any type of disease. Then after that, we should screen this ADMET property. This ADM, absorption, distribution, metabolism, excretion, and this toxicity also. What are the compounds? Because in Ayurveda, we think that every herbs has some compounds which are safe in our human body. But this is not the correct. Actually, Euphorbia nerifolia maybe हमें ये मिला और in different formulas also. For in Sarbanga Sundaras, it contains Jaipal. We think that after Sodhan of Jaipal, there is no toxic compounds present in Jaipal, but it is a wrong concept. I found that after the Sodhan of Jaipal, in one process we have doing the Sodhana. Similarly, in Euphorbia nerifolia also, some of the compounds present in that which are toxic, they have reported that these compounds are toxic. So from my point of view, we should go for the Sodhan of different processes. Then only we can elaborate, we can जितने भी उसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स उसको अगर हमें निकालना है तो हमें बहुत सारे प्रोसेसेस करने से ही वो टॉक्सिक कंपाउंड उसमें से निकलेंगे. हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करके छोड़ देते हैं जो आयुर्वेद के लिए, जैसे अभी लिवर के लिए अभी बता रहे थे कि वो लिवर में वो टॉक्सिक करता है, जैसे गुरुची वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो उसको भी हमें करना चाहिए कि आफ्टर व्हाट आर द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन गिलोय व्हिच आर टॉक्सिक एज पर द कंटेम्परेरी साइंस, because they have already proved that
these things are present, these chemicals, these biomolecules are present in that, which they have told that these are all toxic compounds, because some of the compounds are immunotoxic, some of the compounds are genotoxic, some of the compounds are different toxic value are there. How you can do this? Is the way of for determining any network pharmacology. First of all, you should screen the ADME analysis. What is the absorption ratio of that molecule? What is the distribution ratio of that molecule? What is the metabolism ratio of that molecule? And this excretive ratio of that molecule. Then only the target proteins. What are the target proteins? Then we'll go for the cytosol. All the things I will do in today and tomorrow and day after tomorrow. So this is a very complex thing, but very easy. Whenever you learn all the things, very easy to do. So these are the things. First of all, you should literally you should study the Ayurveda formulation in which you want to work. And then the second thing is to know the retrieving the phytochemical information from PubMed. Actually, these are the two methods in which you can retrieving the phytochemicals. One is dry lab method, another is wet lab method. In dry lab method, we should collect all the information from the different sites, different PubChem sites, PubMed sites are there, where you can collect all the phytochemicals present in that herbs or any formulation. So this is called as dry lab method. Another method is LCMS, or this is gas chromatography, mass spectroscopy, or the liquid chromatography, mass spectroscopy. We will know what are the compounds present in that formulation. This is called as wet lab analysis. For example, you should take Madhumari churno, and we should know this anti-diabetic उसका जो genes है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसकी target proteins को ढूंढना पड़ेगा if you want to study the anti-inflammatory. So, for example, anti-cancer, if you want to study on anti-cancer, so you should go know what are the compounds present in that after LCMS study, and what are the compounds which are having anti-cancerous. So we have to study. This is compound analysis is a very critical process, because in Ayurveda, in any formulation or in any herb also, for example, in Euphorbia nerifolia, I just give you because all the Dravyaguna people are here. So I want to share that in Euphorbia nerifolia, after doing the GCM or this LCMS study, we found that more than 200-500 compounds are there. So 200-500 compounds is not very difficult to describe, difficult to draw a design, because it contains all the compounds present in Euphorbia nerifolia. So you have to extract all the compounds which are responsible for cancer. We should then only just extract all the phytochemicals which are responsible for leukemia. For example, we want to study the Euphorbia nerifolia or leukemia, so we have to extract the phytochemicals present in Euphorbia which are responsible for the leukemia. So this is the another thing that because this is a technique how you can retrieve all the chemicals. So there is another method, is pharmaco compound analysis method. These are the processes in which you can, because after 200-500 molecules present in Euphorbia nerifolia, we found that more than 80 molecules are there which are having anti-cancerous property. From pharmacophore, we just if you analyze all the things from pharmacophore, we just established that more than 40 compounds are there which are having effect in leukemia. So this is a technique by which you can retrieve all the molecules from different sources, different online databases. After retrieving all the things, there is a site called as Swiss ADME. This Swiss ADME and this Smallsoft, this is a database. In Swiss ADME, you can know, for example, this galvanic acid, and what is the absorption ratio of that galvanic acid? What is the distribution capacity of this galvanic acid? What is the metabolism, in which way the metabolism is this galvanic acid, the excretory potential of this galvanic acid? And in Smallsoft, we can determine different, they say there are different sites like drug likeness. Actually, there is a concept called drug likeness. If a molecule more than 30 उसका जो value होता है, then you can call that this is a stable compound. Because हम जो जैसे कहते हैं ना कि ये compound stable है, इसको हम बहुत ज़्यादा दिन तक दे सकते हैं. So these all the things you can determine from this Swiss ADME site.
Swiss ADME. I will give all the things later on. This oral viability, we can know this oral viability, this drug likeness from Swiss ADME. Then is the another the Protox 3. This is a database. We can determine what are the chemicals, what are the molecules present in this Euphorbia nerifolia, which have been toxic in nature. There are different type of toxicities there. So we can know from this Protox 3. Then after that, we should go for this target, predicted target of that molecule. We can go for this binding DB database. After that, we should go for this disgenet. This is a database where you can know the disease, the molecule and the disease, the target and the disease. Molecule, then target. आपने target जान लिए, फिर target जानने के बाद आप क्या करेंगे उसका disease, किस disease में करेंगे, तो वो भी आप disgenet से जाके जान सकते हैं. Then we should know the genes. What are the genes responsible for that disease and the molecules present in that formulation and the genes. How they are interacting. So you can draw a pathway that is called cake pathway. Another pathway, this genetic energy pathway, gene enrichment pathway. So in this pathway you can draw all the things. These are the network pharmacology. ये सब मैंने बता दिया कि dry lab method और analysis wet lab method. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब है, इसको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ. अभी मैडम सुनाई दे रहा है ना मैडम? हाँ सर सुनाई दे रहा है. हाँ, तो हम लोग जो पहले क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ. जैसे पहला प्रैक्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको कहते हैं ड्राई मेथड. तो ड्राई मेथड में हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल यूफोर्बिया नेरिफोलिया, तो हमें क्या करना है, यूफोर्बिया नेरिफोलिया के लिए हमें जाना पड़ेगा पबमेड में. पबमेड में जाके हमें यूफोर्बिया नेरिफोलिया को टाइप करना होगा. Anyone can do actually. Actually in what fast work this in the dry lab method. Dry lab method में we should learn this Euphorbia nerifolia or any drug. For example, you want to know the Oidania semnifera. We want to work on Piper betel. Anything. You should first of all you should go to PubMed. In PubMed you should write that thing, and you should download all the things in a CSV format. There are different format are there. अभी दिख रहा है मैडम, स्लाइड दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है. हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक जैसे पॉबमेट में जैसे मैंने यूफोर्बिया नेरिफोलिया डाला, तो उसमें जैसे देर आर जैसे सिलेक्शन ऑल रिजल्ट ऑन दिस पेज. जैसे आपने इसको क्लिक करें तो इसमें क्या है, एक फॉर्मेट आएगा, उसको कहते हैं CSV फॉर्मेट. उस CSV फॉर्मेट में क्या है, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे फाइल को. ठीक है, तो ये पहला हमारा मेथड है कि हम लोग कैसे कि हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा ऑफ एनी कंपाउंड और एनी फॉर्मूला और एनी हॉर्म फॉर द स्टडी ऑफ नेटवर्क फार्माकोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द PubMed site and write down the point PubMed the drug and then download the things in CSV format. Okay, in CSV format, this is the first thing. Also another thing I can just note down. After downloading, there are different studies will be there. For example, if you download Udania somnifera, I think more than 400, 500 studies will be there in PubMed. More than 1,000 also. How we can extract? First of all, we should extract those things which are related to you, which are related to your study. So after downloading all the things, you should know. Because if I am working on this cancer, so you should collect all the data those are related to cancer. If you are working on diabetes, you should collect the data those are being diabetic data. So in PubMed, you should do all the things that the things which are related to diabetes, the things related to toxicity, the things related to this, for example, antioxidant के ऊपर आप काम करते हो, antioxidant. So those related studies which are being related to your thesis or to your study, those things you should download in a CSV format, because the CSV format is the most important for further study. We should note how this things actually will effective. This is the practical one. After practical one, this is on-site work 2. That is
This is a database called impart database. This impart database. In impart Sir, database. सर नेक्स्ट स्लाइड चेंज करना पड़ेगा. अभी नहीं हुआ. नहीं, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आया. एक मिनट. अभी आया क्या? हेलो. अभी आया सर. आया. हाँ. हाँ. तो दिस इज द ऑन साइट वर्क 2. इसको मैडम मैं करके दिखाऊं क्या? आप लोग कर लेंगे ऐसे 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 गूगल में खोल के आप कर सकते हैं. जैसे हाँ. जो those वांट टू नो ऑल द थिंग्स, अगर आप करना चाहें तो इसको मैं करके भी दिखाऊं क्या मैडम? सर आज आप थेरोटिकल दे दीजिए नॉलेज, कल हम प्रैक्टिकल बेस कर लेंगे. ठीक है मैडम, ठीक है. तो ये दिस इज द सेकंड प्रैक्टिकल, दैट इज द इम्पार्ट database. You should note on all the things, those who want to do this network pharmacology. This is the process. In this process, you should collect all the data. First of all, this PubMed data, then this impart data. In impart data, what happens? In this impart data, the medicinal plant, you should enter that medicinal plant here and just search all the phytochemicals related to your plant or related to your work. Actually will be there. The specific phytochemicals present in this Euphorbia nerifolium, specific phytochemicals present in Withania semnifera will be there in impart database. So you should save this all the result in Excel format. This is the thing. Another thing, this is a database called as knapsack core system. ये जो database है, इसमें भी जाके आप जैसे यूफोर्बिया नेरिफोलिया को डालेंगे तो इसमें ये सब चीजें, जैसे मैंने पाइपर बेटल का इसमें डाला था, तो जैसे पाइपर बेटल में ये सब कंपाउंड्स मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है, दिस कार्बाक्रॉल, यूजिनॉल. तो जो नंबर ऑफ मैच डाटा देयर 12. तो इन नाप्सा कोर सिस्टम, सो ऑल द डाटा यू शुड सेव इन ये साइट आपको खुलेगा नाक्सा कोर सिस्टम में. तो इसमें कुछ नहीं करना है. इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए सिलेक्टेड बाय ऑल टाइप्स ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसमें से मेटाबोलाइट जैसे आप चाह रहे हैं कि कार्बाकल का क्या है, तो इसमें आप जस्ट लिख दीजिए उसमें और उसको क्लियर एंटर कर दीजिए. तो आपका उसका पूरा डिटेल, उसी कंपाउंड स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी जितने भी है डाटा जो सब जो ऑनलाइन डाटाबेस में होगा वो सब आ जाएगा. तो ये थर्ड प्रैक्टिकल था. फिर हमारा जो फोर्थ प्रैक्टिकल है ये है हमारा. सर थर्ड वन दिखा नहीं सर. थर्ड स्लाइड अभी दिखा नहीं. नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है आपको. इससे पहले वाला स्लाइड नहीं दिखाते सर. अभी दिखा. इससे हाँ ये वाला ये दिखा सर. अभी दिखा सर. अभी जो एक्सप्लेन किया ना आपने, अभी दिखा. हाँ, ये नापसैक कोर सिस्टम है. नापसाक ये एक साइट है. इसके डिटेल्स आप मैंने बता दिया है. इसमें कुछ नहीं करना है. इसमें जो भी मेटाबोलाइट्स आप उसमें ढूंढना चाह रहे हैं, उसके डिटेल स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, वो सब आप उसमें डालेंगे तो वो आ जाएगा उसमें. अभी दिख रहा है ना मैडम? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. फिर हम लोग नापसैक के बाद ये सब क्या है ढूंढने का है कि क्या क्या उसमें केमिकल्स है, क्या क्या मेटाबोलाइट्स हैं, क्या क्या उसमें जो भी फाइटोकेमिकल्स हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे, सब उसमें आ जाता है. फिर हम लोग जैसे कार्बाक्रॉल जो पाइपर बेटल का एक मेटाबोलाइट है. आफ्टर दैट एक्चुअली आफ्टर ऑल द थिंग्स वी शुड गो फॉर दिस पॉपकेम डाटाबेस. इन पॉपकेम डाटाबेस we should know the PubChem ID, because for network pharmacology we should know the ID of that specific metabolite. तो उसमें जैसे आप डालेंगे PubChem में, तो the things will be appear that after the मतलब जैसे आप उसमें डालेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा. उसकी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये कार्बाक्रॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, उसकी एक स्माइल डाटा आएगा. स्माइल्स SMILES स्माइल्स डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसको सेव करके रखना पड़ेगा. तो इसको जो है, इसकी जो मेनली क्या है, इस साइट का रोल क्या है पबकेम का, इसमें जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा
आप उसको क्या है नेम देके उस जैसे कार्बा जैसे आपने डाउनलोड करे तो उसको क्या करेंगे, उसका नेमिंग करके एक फोल्डर में डाल के रखते जाएंगे। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, इसमें ऐसे केमिकल्स मिलेंगे, जैसे बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि यूफोर्बिया नेरिफोलिया में 2500 कंपाउंड मिले, तो उसमें से हमें क्या है 60 कंपाउंड ऐसे मिले जो रिलेटेड टू लीकोमिया। तो लीकोमिया के जितने भी जैसे पाइपर बेटल है, पाइपर बेटल जैसे मेरा एमडी में काम था, तो हमने देखे कि उसमें मेनली 40 टू 50 जो मिला हमें, जो रिलेटेड टू कैंसर है। तो हमने उस चीज को क्या एक एक करके डाउनलोड करते गए और उसको नाम देते गए। तो ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके कोई भी मेटाबोलाइट्स को। ये हो गया ड्राई मेथड। ये ड्राई मेथड जो है ये ज्यादातर के देखिए कोई भी ड्रग का हम एनालिसिस करेंगे उसका दो मेथड मैंने पहले बताया, ड्राई लैब मेथड है, वेट लैब मेथड। ड्राई लैब मेथड में आप लोग पॉपकेम पॉपमेट पे जाके भी कर लेंगे, लेकिन जो आज के दिन में सबसे ज्यादा क्योंकि ऑथेंटिक उसको माना जाता है, क्योंकि जो आपके फॉर्मूले में क्या है, क्योंकि आपका जो सोर्स है, आपका जो आपने दवाई कब कलेक्ट की है, आपने जैसे सुनी है, आपने जिस समय कलेक्ट करेंगे उसकी मेटाबोलाइट्स अलग आएगा। तो हमने जैसे इस मेथड से हमने उसका एनालिसिस किए थे, जो मैंने बता रहा 2000 जो हमारा मेटाबोलाइट्स उसमें मिले थे, तो उसमें हम लोग एलसीएमएस कराए थे, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जीसीएमएस आप कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें क्या है बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे। जैसे आप कोई भी हॉट को लेते हैं तो मैक्सिमम 2000 3000 4000 कंपाउंड्स आएंगे। तो हम उसको शॉर्टलिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट टेक्निक्स हाउ टू डू शॉर्टलिस्ट ऑल द कंपाउंड्स। तो उसमें क्या है, पहले जैसे कैसे करेंगे शॉर्टलिस्ट करने का 3-4 तरीका है। जैसे पहले उसके अबाउटेंस देखेंगे, जो जैसे ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये स्टार्च है, सेलुलोज है, वो देखेंगे। या उसका जो एक एमजेड रेशियो होता है, एमजेड रेशियो मास मैच कहते हैं उसको, कि वो सब हम देखेंगे कि इसका मास मैच जिसका ज्यादा है वो उसको हम लोग पहले ढूंढेंगे। फिर जैसे नेचर ऑफ कंपाउंड्स, जैसे वो पोलर है नॉन पोलर है, वो सब हमें ढूंढना है। तो पहले देखेंगे कंपाउंड्स फ्रॉम द, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो हर्ब से होंगे, और बहुत सारे कंपाउंड से और भी सोर्स से भी आ सकते हैं आपके जो ड्रग के अंदर। तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर देख के और उसकी जो थेरापेटिक इंडेक्शन उसको जब डिफरेंट साइट में आप डालेंगे तो हमें मिलेगा। तो दिस इज द वे ऑफ मतलब उसको रिट्राइव करना है ऑफ द केमिकल्स। तो इस मेथड है। जैसे हमने इसका एलसीएमएस कराए थे, किसका, हमारा यूफोर्बिया नेरिफोलिया का। तो एलसीएमएस डाटा में देखिए ऐसे हम लोगों का जो मिला था, ये जो जीए है ग्राफेनिक एसिड, इसका जो पीक है 574.20 में आया था। एपीएल का पीक 396 में। तो इस तरह से डिफरेंट पीक्स आता है। तो आपका जो मेन पीक्स है आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है तो एमजेड रेशियो में। तो ये पहले ये मैंने बता दिया आपका वेट लैब मेथड जो है। फिर हमारा जो उसके बाद अगर आपने ड्रग का कंपाउंड आपको पता चल गया, जैसे आपने 80 कंपाउंड निकाल लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है एक साइट है उसको कहते हैं स्विस एडीएमई। स्विस एडीएमई साइट में ये जैसे आप देखेंगे इस स्विस एडीएमई में, इसमें क्या दो चीजें आता है। एक स्ट्रक्चर देने से आपके इसके आइदर स्ट्रक्चर दे दीजिए, या जो स्माइल से आपने जो पॉपकेम डाटा से निकाले उसको दे दीजिए और उसको रन कर दीजिए। अभी दिख रहा है ना मैडम? सर हम ऑन साइट वर्क 3rd स्लाइड पे है, इसके हाँ? नेक्स्ट में जाना पड़ेगा शायद। हाँ ऑन साइट अभी नहीं आया है अभी दिख रहा है सर। ऑन साइट वर्क 5 पे 3 हो गया, अभी 3 दिख रहा है, अभी 5 दिख रहा है। 5 दिख रहा है ना? हाँ 4 अभी दिख दिख रहा है। वेट अभी वेट एनालिसिस एलसीएमएस जीसीएमएस दिख रहा है। हाँ ठीक है, यही मैं बता रहा था। अभी जो नहीं हाँ दिखा तो मैडम थोड़ा बता दीजिए, ठीक है? हाँ सर। तो अभी बोर तो नहीं हो रहे? मैं अभी अभी 10-15 मिनट लगेगा, आप चलेगा ना? हाँ सर। हाँ हेलो? हाँ सर, चलेगा चलेगा। चलेगा। तो इसमें सर क्या है, स्विच एडीएमई के मोस्ट इसमें क्या है, मतलब हम लोग का जो एनालिसिस हम करते हैं ड्रग का, जब हम कंपाउंड का हमें पता चल गया कि इसके अंदर इतने कंपाउंड है, तो हमें उसका एडीएमई देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो है उसका अगर आप एडीएमई जान लेंगे कि ये ड्रग जो है कितना स्टेबल है, क्योंकि जो कंपाउंड है जो भी आपके मेटाबोलाइट होगा, अगर उसका जो है कितना आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को जो जो कंपाउंड आपने सॉरी एनालिसिस किए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है,
वो जो इसका जो HI को स्कोर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे उसका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, उसका जो एक बहुत सारे चीजें उसमें आता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ, जैसे इसको कहते हैं बॉयल्ड एग स्ट्रक्चर। इस जो ऊपर है दिख रहा है ना मैडम, बॉयल्ड एग। हेलो सर ऑन साइट वर्क 6 में है क्या? हाँ, ऑन साइड वर्क में 6 में जो सेकंड फिगर है इसमें देखिए, सो बॉयल्ड एग, एक इसमें स्ट्रक्चर आ रहा है ना। मैं जो कर्सर को घुमा रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ सर। जी जी। एक्चुअली क्या, जब पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपाउंड का जैसे हमें स्ट्रक्चर यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो इसका स्माइल्स आ जाएगा और उसे कुछ नहीं करना है, रन करना है। तो ये रन जब करेंगे तो आपको इस तरह से डाटा आएगा। ये जो डाटा है इसमें क्या करना है आपको, इसमें 3-4 चीजें हमें स्टडी करना होता है। इसका जैसे बायो अवेलेबिलिटी कितना है, तो बायो अवेलेबिलिटी देखिए इसमें जैसे एक तो होती है बॉयल्ड एग, इसका स्कोर आता है। बॉयल्ड एग जो है ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे बॉयल्ड एग जो है ये है, ये बॉयल्ड एग है। अभी स्लाइड दिख रहा है मैडम? हेलो, हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। बॉयल्ड एग वाला दिख रहा है ना? हाँ, हम्म। तो ये जो बॉयल्ड एग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल्ड एग में क्या है, जैसे इसमें 3-4 चीजें बताते हैं। एक तो बीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो आपका मेटाबोलाइट है वो कितना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। HI मतलब इसका जो ऑब्जर्वेशन है इंटेस्टाइन में कितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। जैसे इसका PGP है, PG मतलब मॉलिक्यूलर जो आपका मॉर्ज है, जिसे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जैसे CNS में कितना मॉर्ज होगा, उसकी जो मॉलिक्यूल CNS मतलब हर कंपाउंड का, हर मेटाबोलाइट का इस तरह से आपको एक बॉयल्ड एग आएगा, उसका स्टडी करना। जैसे ये येलो पार्ट है, देखिए येलो पार्ट जो है एक, और एक व्हाइट पार्ट, 2 पार्ट में इसका स्टडी हमें करते हैं। जैसे एक पिंक, जैसे येलो पार्ट है, येलो पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाइट पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीजें क्या है हमें जानना पड़ेगा। जैसे येलो पार्ट जो है मतलब ये जो कंपाउंड है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ज्यादा क्रॉस करेगा। और जैसे व्हाइट पार्ट अगर छोटा होगा या बड़ा होगा, मतलब ये जैसे इसमें बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या है, इसमें एक बॉयल्ड एग मेथड देखते हैं। फिर इसमें और एक चीज देखते हैं बॉयल्ड एग के बाद, इसका देखते हैं ऑन साइट वर्क 7 दिख रहा है मैडम? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो ये जो है मैडम, ये क्या है, बॉयल्ड साइट देखने के बाद हम जाएंगे सेकेंड में, क्या इसकी बायो अवेलेबिलिटी राडर देखेंगे। तो इसमें देखिए 5 मतलब 5 फीचर है। उसकी साइज क्या है, फॉर एग्जाम्पल काब्रा कर्व जैसे आपने लिए हैं तो इसकी साइज क्या है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखिए उसका स्ट्रक्चर आ रहा है, इस तरह से उसकी पोलरिटी कितना है, उसकी इंसॉल्युबिलिटी कितना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, ये सब डिटरमिनेंट आपको उसमें हो जाता है। तो ये जो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसका में जैसे स्माइल्स होता है, स्माइल्स जो है बहुत जानना जरूरी है, वो आपको पॉपकेम में मिल जाएगा। तो जब आप स्माइल्स इसमें जान लेंगे तो इसमें क्या है, उसकी फॉर्मूला जान लेंगे, उसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना जान लेंगे, उसमें जैसे उसकी लाइपोफिलिटी, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जानते हैं हम। जैसे ADME में उसकी लाइपो मतलब लिपिड में कितना सोल्यूबल्स है, वाटर सोल्यूबिलिटी कितना है उस कंपाउंड का, उस मेटाबोलाइट का, फार्माकोकाइनेटिक उसका क्या है, उसमें क्या है, और एक लिपनेसिस स्कोर ड्रग लाइकिंग में है। जैसे ये दिख रहा है लिपनेसिक के, लिपनेसिक जो है ये जो ये आना जरूरी है क्योंकि इसमें कोई वायोलेशन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे 5 प्रकार के स्कोर होता है, लिपनेसिस स्कोर, घोष स्कोर, वेपर स्कोर, इगन स्कोर और मुगे स्कोर। ये सब जो है इससे आपका, जैसे इसमें देखिए बायोबिलिटी इसका 0.55 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड स्टेबल है। तो आपके जितने कंपाउंड है आप उसमें जान पाएंगे कि मेरा जो कंपाउंड कितना स्टेबल है। क्योंकि देखिए ये जो एक स्टडी है, जैसे हम कहते हैं इसकी लाइपोफिलिसिटी क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके जैसे बॉन्ड कैसा है, लाइपोफिल जैसे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन एक होती है। जैसे ये देखिए मैडम लिखा है लॉग लॉग लाइपोफिलिटी में लॉग पी लिखा है, लॉग पी, जैसे ये सब चीजें क्या है, ये कॉन्सेंसस कहते हैं। लॉग वाटर सोल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन कितना है वाटर, क्योंकि देखिए कोई भी कॉन्सेंट्रेशन एक रेंज होता है, जैसे उसका 3 to 4.5 होना चाहिए जो उसके जो लाइपोफिलिसिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन हो। जैसे कंपाउंड जैसे ये देखिए 3.49 आ रहा है, ये 3.49, इसका मतलब कि इट्स गुड कंपाउंड, इसके रेंज के अंदर आ रहा है।
जैसे वाटर सॉल्युबिलिटी है, वाटर सॉल्युबिलिटी जो है जैसे वो आना चाहिए -3.36 का अंदर है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये सब जो डाटा है, जैसे आप जीआ एब्जॉर्प्शन डाटा कितना है, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे पीजीपी कह रहा है, ये हमें पीजीपी सबस्ट्रेट लिखा है, नो लिखा है। पीजीपी मतलब जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है ये नो है। जैसे सीआईपी, जैसे इसके अंदर देखिए सीआईपी इनहिबिटर, बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं। वो सीआईपी इनहिबिटर जो एग्नेस्ट जैसे नाम कह सकते हैं, ये इनहिबिट करता है, मतलब जो इनहिबिटर होगा इसका मतलब वो इनहिबिट करेगा। जैसे इसमें CYP82 इनहिबिटर है ये से, तो इसका मतलब ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये जैसे लिपनेस स्कोर जैसे मैंने बताया, ये वायोलेट नहीं करना चाहिए, जैसे जीरो वायोलेशन इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है जीरो वायोलेशन, ये से। ठीक है, इसमें जैसे लिपनेस स्कोर 5 आनी चाहिए, मतलब ये जो है मतलब इसमें क्या है 5 से 3, उसमें क्या है आपका रूल को वायोलेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपका उसमें दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना मैडम स्लाइड? हेलो? हाँ जी। हाँ हाँ सर। हाँ, फिर हमारा फिर ये तो हो गया ये सब। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रग लाइकनेस देखे आप लोग, जो मैंने बताया कि इसके स्कोर कितना है, मतलब ग्रेटर देन 30 आनी चाहिए, वो उसका भी सर ऑनसेट वर्क 7 आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं 7 तो चला गया, अभी अभी 7 ही दिख रहा है। 7 ही दिख रहे हैं। हाँ। अभी हेलो, बॉइल्ड एग जी 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 जी। दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। हेलो, अभी कौन सा स्लाइड है? अभी कौन सा स्लाइड दिख रहा है? अभी 8 बॉइल्ड एग का। सर 7 हेलो, 7 हाँ 7 दिख रहा है, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर दिया। फिर हम लोग चलते हैं ड्रग लाइकनेस से, वो है प्रॉपर्टी जो है कार्बोकल का हमें देखना चाहिए, मैंने बता दिया ड्रग लाइकनेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे देखते हैं। फिर आता है जैसे ये सब चीजों डाटा को क्या है CSV फॉर्मेट में उसको सेव करते जाना है। जो भी आपका ड्रग का जो भी आपका मेटाबोलाइट या जो भी फाइटोकेमिकल्स का आपने डाल रहे हैं, उसकी जो है उसको CSV फॉर्मेट में आपको सेव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक साइट, एक एक मेटाबोलाइट्स को आपको सेव करते जाना है। फिर इसमें क्या है, मोलसॉफ्ट करके एक साइट है, सॉफ्टवेयर है मोलसॉफ्ट, दिख रहा है ना, वन साइट वर्क 11 दिख रहा है? जी जी जी। हाँ, ये मोलसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में हमें देख लेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी ग्रेटर देन 30 आ रहा है नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर जैसे आपने 80 केमिकल, 80 मेटाबोलाइट्स आपने ढूंढे, तो आपने अगर मोलसॉफ्ट में डाल के एक एक को देखना पड़ेगा। बहुत इजी है, इसमें आप एक एक करके कर सकते हैं। इसमें जैसे ये ऑप्शन है कि आप इसमें स्ट्रक्चर को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और उसको रन कर देंगे तो वो आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे वो दिखेगा उसमें, उसको कहते हैं ड्रग लाइकनेस, उसका हम लोग स्कोर करना चाहिए, स्कोर कितना आ रहा है। जितना अच्छा स्कोर आएगा वो आपका ड्रग ज्यादा स्टेबल होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं रूल 5 जो है ड्रग लाइकनेस से सही होना चाहिए। फिर हम आते हैं टॉक्सिक, जैसे ऑनसाइट वर्क टॉक्सिसिटी जानना है, वो कंपाउंड जैसे है तो इम्यूनोटॉक्सिक है नहीं है, ये कार्सिनोजेनेसिस टॉक्सिक नहीं है, या इंटेस्टाइन में कोई टॉक्सिक करता है नहीं करता। तो ये सब चीजें हम जान सकते हैं। प्रोटॉक्स 3 करके साइट है, नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, हम 11 पे है अभी। हेलो, हम ऑन साइट वर्क 11 पे है सर। हाँ 11 पे है, हाँ अभी नेक्स्ट ये भी जाना दिख रहा है पड़ेगा। ना? हाँ 11 दिख रहा है सर। हाँ, तो ये ड्रग लाइकनेस से है। फिर 12 में प्रोटॉक्स 3 दिख रहा है, नहीं सर, नेक्स्ट या जाना पड़ेगा। प्रोटॉक्स 3? नहीं 11 अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो दीजिए स्लाइड, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका जो भी पॉपकेम का जो आपका डाटा है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो उसमें क्या है, आपका वो पॉपकेम का जो नेम है, जो पॉपकेम का आपका जो नेम होगा वहां पे डाल देंगे, तो सर्च कर देंगे, तो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड जो होगा वो निकल आएगा। तो ये जो कहते हैं प्रोटॉक्स 3। तो आपके जो आपने जैसे 60 या 80 मॉलिक्यूल्स आपने ढूंढे उस फॉर्मूले में, तो उसको प्रोटॉक्स 3 में डाल के देखना पड़ेगा कि ये इसमें कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक है।
तो जो टॉक्सिक कंपाउंड को उसको आपको रिट्राइव करके निकाल देना है, जो कंपाउंड टॉक्सिक नहीं है उसी कंपाउंड को लेना है नेटवर्क फार्माकोलॉजी के लिए। ठीक है मैडम? हाँ, फिर अभी थोड़ा सा अभी तो टाइम हो रहा है शायद, मुझे लगता है फिर आगे हम करेंगे, नहीं तो कल करेंगे ये सब। सर चलेगा, वी आर ऑलरेडी लेट, तो अभी सर अभी हाँ सर कितने रिमेनिंग हाँ है ऑन साइट वर्क? जैसे अभी बताते जाऊंगा, वैसे बहुत सारे हैं मैडम। इसमें क्या है, अभी तो मान के चलिए अभी 15 मिनट लगेगा आ रहे से। अगर आप बोलेंगे तो मैं पहले ऑन साइट का कर लेता, नहीं तो अगर आप बिजी नहीं तो मेरे हिसाब से कल करेंगे, नहीं तो कल एक्चुअली करके फिर ऑनलाइन काम कर। जी हाँ, जी सर, कल रिमेनिंग आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा और फिर ऑनलाइन डायरेक्ट जस्ट लाइक हाँ हाँ ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग देंगे मैडम। उसमें क्या है, एक तो ऑनलाइन में क्या है, एक साइटोस्कोप करके साइट है। मैं अच्छा, चाहता हूँ सब इसको मैं सबको लिख देता हूँ उसमें, सब लोग इसको अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करें। जी साइटोस्कोप, फिर हमारा साइटोस्कोप में, और इसमें पाइमोल, ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए चाहिए, पायरेक्स। उसके बाद क्या है, ये एक बस इतना भी पहले डाउनलोड करिए सब लोग अपना। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइटोस्कोप को कैसे रन करते हैं उसको मैं कल बताऊंगा। फिर जी जी पाइमोल जी और पायरेक्स भी डाउनलोड कर लीजिए, और जी एक जी डिस्कवरी डिस्कवरी ये सब उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में ना। जी जी सर जी। हाँ ठीक, डिस्कवरी विजुअलाइजर, बायोवियर डिस्कवरी है मैडम, उसका नाम है बायोवियर डिस्कवरी। इसका मैं लिख देता बायो हूँ, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, बायोवियर डिस्कवरी। ओके। हाँ, ये सब इसको कर दीजिए, कल फिर डिस्कस करेंगे। जी जी, so thank you very much sir. So we are already late because of some network issues, so we need to stop here. और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ ज्वाइन हुए हैं, प्लीज डाउनलोड ऑल द sites sir has mentioned, और कल फिर हम जस्ट लाइक ट्रेनिंग हम इसे लेंगे, क्योंकि आज काफी सर ने थियोरेटिकल पार्ट हमें बताया है, और रिमेनिंग जो है वो कल एक्सप्लेन करेंगे। So thank you very much sir, and all respected senior member who are joined, and colleagues, and all Dravya Guna Rasashastra people or Ayurveda people who are joining this meeting on network pharmacology. तो अभी with Shanti mantra we need to stop here. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamatu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Once again, thank you to all our guest speaker, Manoj Das sir, Shukla sir, Chaudhary sir, and all respected member, Mishra sir, and we will meet again tomorrow at 7 p.m. Thank you, and Shubha Ratri. Dhanyavad to all. थैंक यू मैडम, थैंक यू।